વડોદરા શહેરના મકરપુરા એસઆરપી ગ્રાઉન્ડ ખાતે માહેશ્વરી યુવા સંગઠન દ્વારા વીએમપીએલ 2025 પોરવાલ કપનું નાઇટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે એસઆરપી ગ્રાઉન્ડના આઈજી રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબ તથા ડીવાયએસપી ડીબી બામણિયા તથા વીબી પટેલ સાહેબની ઉપસ્થિતિમાં વીએમપીએલ પોરવાલ કપ 2025નું ઓપનિંગ સેરેમની કરવામાં આવી હતી। આ ટુર્નામેન્ટ 3 થી 7 તારીખ સુધી નાઇટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં માહેશ્વરી સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। जय महेश, जय मेवाड़, जय माहेश्वरी। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी भगिनी संस्था माहेश्वरी युवा संगठन एक ऐसे कार्यक्रम को अंजाम दे रही है जो आज दिन तक माहेश्वरी समाज के इतिहास में और खास करके बड़ौदा माहेश्वरी समाज के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इन्होंने जिस तरह से काम किया है वास्तव में समाज के लिए बहुत गौरवपूर्ण है। आज हमारे समाज की 12 टीमें यहाँ पे क्रिकेट खेल रही है। इसके साथ साथ अंडर 14 सीनियर सिटीजन की टीम भी ये 5 दिन का कार्यक्रम हमारी युवा संगठन की एक बहुत ही अच्छी नेतृत्व वाली टीम ने किया है। समाज इनके ऊपर बहुत गौरव करता है और हम वास्तव में समाज के सभी नागरिक इस काम में सहयोग करके किस तरह से समाज को आगे बढ़ा सकें, साथ साथ में हमारा समर्पण दे सके, ऐसी हम भावना के साथ यहाँ खड़े हैं और सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और सभी लोग इसके अंदर शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। टूर्नामेंट कितने दिन तक है? ये टूर्नामेंट 3 तारीख से लगा के 7 तारीख तक चलने वाला है। आपका नाम? राजकुमार मंडोरा। जय महेश। माहेश्वरी युवा संगठन मेवाड़ संभाग द्वारा प्रथम बार वीएमपीएल 1 का आयोजन किया जा रहा है। इतना सुंदर आयोजन, जैसा आईपीएल की तरह ही जैसे नीलामी टीमों की होती उसी प्रकार माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा भी 12 टीम का चयन किया गया है। उसमें भी हराजी की गई सभी खिलाड़ियों की। सर, ये टीम कितनी है? टीम टोटल 12 टीम है। और कौन सी जगह पे टूर्नामेंट चल रहा है? ये एसआरपी 9 ग्रुप सुसन 4 रास्ता के पास में डी मार्ट के सामने है। आपका नाम? राजेश बेड़िया, माहेश्वरी युवा संगठन अध्यक्ष। कौन कौन यहाँ चीफ गेस्ट तरीका आया? चीफ गेस्ट में नायब सर आए हुए एसआरपी के 9 ग्रुप के आईपीएस ऑफिसर साहब, उन्होंने इतना कीमती टाइम निकालने के बाद पधारे। राजेंद्र सिंह चुड़ासमा साहब पधारे, डीवाईएसपी साहब बामणिया साहब भी पधारे, डीवाईएसपी साहब पटेल साहब भी पधारे और हमारे समाज के पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण भी पधारे और हमारे भावांशागण वो भी सब पधारे। ग्रुप 9 वडोदरा सुंदर क्रिकेट ग्राउंड पर माहेश्वरी समाज वडोदरा तरफथी क्रिकेट टूर्नामेंटનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। આજે માહેશ્વરી સમાજના સૌ હોદ્દેદારશ્રીઓ, ભામાશા, તમામ ટીમના મેમ્બર્સ અને ટીમ્સ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। હું છેલ્લા 3 વર્ષથી જોઉં છું, અમે લોકોએ આજે ગ્રાઉન્ડ બનાવ્યું ત્યારથી માહેશ્વરી સમાજે ખૂબ અમને મદદ કરી છે। આ લાઇટના ટાવર્સ નાખવાથી ઇનિશિયલ શરૂઆતથી લઈ વર્ષો પહેલા અને હમણાં 15 દિવસ પહેલા પણ લાઇટના ટાવર્સની હાઇટ વધારવા માટે માહેશ્વરી સમાજે અમને ખૂબ ટેકનિકલ માર્ગદર્શન આપ્યું, મદદ કરી। અને હું જોઉં છું આ ગ્રાઉન્ડ સારું બન્યા પછી અલગ અલગ જ્ઞાતિઓ દ્વારા ખૂબ સુંદર यहाँ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થતું હોય છે, પણ માહેશ્વરી સમાજની શિસ્ત, એમની કટિબદ્ધતા, એમનું ડિસિપ્લિન, સાફ સફાઈ વગેરે ખૂબ ઉત્તમ કક્ષાનું હોય છે। હું આ માહેશ્વરી સમાજને ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું। રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં પણ એ લોકો પોતાનું યોગદાન આપતા રહે અને આપણા દેશને આપણે એક મહાન બનાવીએ એવી શુભકામનાઓ। થેન્ક યુ।
સમાચારોની ઝડપી અપડેટ માટે હમણાં જ સત્ય સ્વરાજ ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.